Hello friends, I am Drashti Patel from Saraswat International Academy. I am teaching statistics of 12 commerce. Chapter number 1, index number part 1. We know that national income, industrial production, unemployment, export import, investment, population of country, death rate, birth rate, demand and supply changes within time. The proportion of these changes and direction are uncertain. To study of such a changes, it is essential to have relative measure. Such a relative measure is obtained by means of a ratio. This measure construct in an index number. In this chapter, we will study about meaning, features, limitation, different method of index number, selection of base year and cost of living index number. Here, important points to be remembered. First, variable. The price, production, demand, supply and quantity etc. of an item are called the variable for that item. The changes take place in the value of the variable for two different time periods are compared by two different methods. Here we have a two method. First, absolute measure different method, and second, relative measure ratio. Then relative change, the ratio of changes in the value of the variable at two different time period is called the relative changes. Then index number, and the percentage changes in the value of a variable associated with any item for the given period compared to its value in a fixed period is called an index number. Here we study of base year and current year. First, base year. When the period, when the price of an item is compared with the price of the same item in some fixed year of a past, then that fixed year is called a base year. And second, current year, the year for which the price and item to be compared with the price of the year is called a current year. In the construction of index number, the value of variable for the current period is compared with the value of the fixed period. This fixed period of year is called a base year. For example, if the price of an item in the year 2016 is to be compared with the price of the same item in 2015, the year 2015 called a base year and 2016 is a current year. Second example, if the price of the petroleum in the year 2010 is to be compared with the price of the petroleum in 2020, the year 2010 is called a base year and year 2020 is called a current year. Now, next, method of selecting base year. Selection of base year can be done by two methods. First, fixed base method and second, change base method. Next, calculation of index number. Here we have a three formula. First, Laspeyres formula, second, Passe formula, and third one is a Fisher formula. Now, fixed base method. First of all, index number denoted by I
and formula is value of the variable in current year upon value of the variable in base year into 100. Here current year denoted by P1 and base year denoted by P0. Suppose here using quantity, so quantity denoted by current year Q1 and quantity denoted by base year Q0. Now example 1. The data about wholesale price of wheat in region are as follow. Taking the year 2005 is a base year. Noted 2005 is a base year. Prepare the index number for the price of the index item for remaining year. State the percentage increase in the period of wheat in the year 2013 from this index number. फर्स्ट ऑफ ऑल इतना याद रखना है कि बेस ईयर क्या है. बेस ईयर यहाँ 2005 है. सपोज हमें बेस ईयर दिया नहीं होता तो भी हमें डायरेक्ट बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 ले लेना है. ओके, हियर सो दैट वी विल फाइंड द इंडेक्स basic index number as the year 2005 is to be taken the base year. The index number for the price of wheat in the year 2005 will be taken as a 100. Now we find out the index number. First we write year 2006 to 2013. Then price per quintal is a current year value, so we denoted by P1. Then third column is index number. Formula is P1 upon P0 into 100. First 2005 current year value is 1650 and 2005 also is a base year, so 1650 upon 1650 into 100, so answer is 100. Then 2006 is a current year, so current year value is a 1690, so index number 1690 अपन P0 इक्वल टू 1650, जो 2005 बेस ईयर है उसकी वैल्यू लेनी है इनटू 100. ओके, सब फार्मूला में P0 आपका कॉमन रहेगा बिकॉज बेस ईयर हमें यहाँ दे दिया है. ओके, देन थर्ड फॉर अ 2007 is a current year here, so 1730, so 1730 upon 1650 into 100, so answer 104.85. सिमिलर आपको सबके इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने हैं. नाउ हियर स्टेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ wheat in the year 2013 from the index number. यहाँ हमें एक एक्स्ट्रा आंसर मांगा है कि 2013 को बेस ईयर के साथ कंपेयर करना है कि 2013 में ये रेशियो बढ़ा है या कम हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सो दैट इंडेक्स नंबर हियर 2005 इंडेक्स नंबर इज 100 and 2013 index number is 118.18, so increase in 2013. So we can be said that increase in the price of wheat in the year 2013 is 118.18 minus 100 equal to 18.18% with respect to the year 2005. Now second example, the price per unit of 6 food item in the year 2014 and 2015. Here we have only 2 year, 2014 and 2015. जब भी आपको नहीं देते कि कौन सा बेस ईयर लेना है तो दोनों के कंपैरिजन में जो प्रीवियस है उसे आपको बेस ईयर लेना है. हियर हमें ऑलरेडी दे दिया है कि 2014 इज़ अ बेस ईयर, बट कभी नहीं मेंशन करते तो हमें कौन सा ईयर लेना है जो ओल्ड है. ओल्ड माने जो प्रीवियस का है उसे हमें बेस ईयर ले लेना है. कंप्यूट द जनरल इंडेक्स नंबर फॉर द प्राइस
of food item and state the or will rise in the price of this फूड आइटम. यहाँ हमें इंडेक्स नंबर फाइंड तो करना है, बट जनरल इंडेक्स नंबर जो भी फूड आइटम है उसके सारे इंडेक्स नंबर एक ही इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है. फर्स्ट 2014 इज अ बेस ईयर, सो वी डिनोटेड बाय P0. 2015 is a current year, so denoted by P1. Then last column फॉर्मूला प्राइस रिलेटिव. यहाँ प्राइस रिलेटिव अकेले फाइंड करने से अच्छा इंटू 100 करके और अवल इंडेक्स नंबर भी आप फाइंड कर सकते हो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट आइटम ब्रेड, एग, घी, मिल्क, चीज़, बटर. ओके, P1 P0. प्राइस रिलेटिव इक्वल टू P1 अपन P0. So 20 for bread 28 upon 25 equal to 1.1200. For egg 35 upon 30, so 1.1666. 380 upon 375 equal to 1.0133. 40 upon 36 equal to 1.1111. For a cheese 500 upon 450 equal to 1.1364. For a butter 300 upon 265 equal to answer 1.1321. Here हम टोटल कर देंगे 6.6795. Now general index number of 6 food item equal to sigma P1 upon P0 upon 9 into 100. यहाँ हमारे पास सिग्मा P1 अपन P0 का टोटल यहाँ हमें दिया है 6.6795. सो इक्वल टू 6.6795 अपन 6 बिकॉज नंबर ऑफ आइटम वी हैव अ 6. So upon 6, so answer 111.33. Therefore general price index number of 6 food item is I equal to 111.33. यहाँ वापस बोला है कि हमें कंपेयर करना है जो फूड आइटम की प्राइस है वो इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई फॉर अ कंपेयर टू 2014. यहाँ आप देख सकते हो हियर our index number is 111.33 और बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमारा 100 रहता है. सो मोर वैल्यू इज़ 111.33 कंपेयर टू 100. सो इट कैन बी सीन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इंडेक्स नंबर आई दैट देर इज़ एन ऑल ओवर इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ फूड आइटम ऑफ 111.33 minus 100 equal to 11.33% in the year 2015 as compared to the year 2014. Now, example 3. The data about sugar production of a sugar manufacturing company from the year 2008 to 2000 as follows. यहाँ हमें 2008 टू 2015 का शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्रोडक्शन का डेटा दिया हुआ है. प्रिपेयर अ इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड फ्रॉम दिस डेटा बाय टेकिंग एवरेज प्रोडक्शन. यहाँ हमें बेस ईयर नहीं दिया है बट हमें एवरेज लेनी है 3 ईयर की, उसे हमें बेस ईयर लेना है. हियर 3 ईयर इज़ 2009, 2010 and 2011. Okay, so average production of the year 2009, 2010 and 2011 equal to P0 196, the production 196, 202 and 214. Okay, upon 3 number of year. So 612 upon 3 equal to 204. So P0 equal to 204. Now we write year, then production. Production is the current, so we denoted by P1. Then index number by fixed base method. Formula is P1 upon P0 into 100.
for a year 2008. Current year is a 2008. So 186 upon base year 204 into 100. So answer 91.18. Then next year 2009. 2009 production is 196,000 ton. So 196 upon 204 into 100. So answer 96.08. Then 2010. In 2010 sugar production 202,000 tons. So index number 202 upon 204 equal to 99.02. सिमिलर ऐसे 2011 टू 15 तक आपको इंडेक्स नंबर फाइंड करने हैं. Here homework for you. Find the index number from the following data about annual income of worker in company from the year 2008 to 14. यहाँ आपको 2008 to 14 के डेटा दिए गए हैं जो कंपनी में वर्कर्स का वर्क करते हैं उसकी एनुअल इनकम.